With your kind permission, may we commence? One of the first steps that the United Progressive Alliance government had taken was to enact the Right to Information Act in 2005. This piece of legislation was perhaps the single most empowering instrument that had been enacted in the past 70 years. For the first time ever, the opaque innards of both administration and governance were exposed to the antiseptic sunlight of public scrutiny. The Right to Information Act created an upheaval not only in the echelons of government, but had wide ramifications which reached out into almost every village in this country. There are people who started off as RTI activists and ended up becoming chief ministers also. And notwithstanding protests from within government, outside government, the UPA through its 10 years from 2004 to 2014 did not allow any dilution, and I underscore the word any dilution, to take place in the RTI paradigm. However, ever since this government has taken office, there has been an attitude of active neglect towards the RTI. Not only are RTI queries not answered, but even the appeal processes have been very cavalierly treated. And there has been a non-formal attempt over the past 3 odd years, 34 months, to scuttle the RTI Act. And finally, it seems that the NDA government, the BJP-led NDA government, has decided to formalize the process of subverting the RTI. The new draft rules which have been put out in the public space, the RTI rules of 2017, on the face of it, they look extremely innocuous. But the devil lies in the detail. It is the fine print which gives away the intent of the government. And I will give you only 5 examples. The first and the foremost is that the draft rules say that if an RTI application is of more than 500 words, that RTI application can be rejected. Now, it's very cleverly worded. It says that if it is ordinarily above 500 words, then it can be rejected. So therefore, it's not a clear bar that if you come to 501, the application will be rejected, but it puts discretion in the hands of the public authority, that if you happen to exceed the word count, that is enough reason to
refused to reply to the RTI query. Number two, there has been a steep enhancement in the RTI charges. So therefore, earlier if you could get everything at a nominal cost, 1 rupee per page for photocopying, that's been increased by 100%. Actual price has to be paid with regard to models, larger photocopying, and even the cost of postage, which is if you make an RTI query and the reply which is given to you, the cost of the reply will have to be borne by you. In other words, very surreptitiously the bar is being raised to make the RTI paradigm difficult for ordinary people to be able to access it. Then there has been a tightening of norms on handwritten appeals. That if there is a handwritten appeal, if it is not neatly typed in double space, it can be rejected. So therefore, you are imposing a cost on the poor and the disenfranchised. That you must go to a typing shop or to a stenographer, get your appeal typed, and then put it in the system. Similarly, there is a provision which says that there will be an abatement of proceedings if the applicant dies. Now, RTI activists are extremely apprehensive that this will increase the number of attacks which are taking place and which have resulted in the unfortunate death of many RTI activists. Then there is a provision which allows the public authority or the first appellate authority to file counter appeals, which essentially means that it becomes a judicial proceeding. So therefore, suppose if you file an RTI application, you are not happy with the outcome, you file an appeal. Now the authority who has rejected your application will be allowed to file a counter to that, which means that the whole process becomes more contested. And your possibility of being able to get information in the requisite time frame may actually almost end up doubling. And these are only 4 or 5 illustrative examples which I have given of how the entire RTI regimen is sought to be constricted, suffocated, and finally subverted. So therefore, it is the responsibility of all progressive forces, all those people who believe in transparency, who believe that government should be accountable, who believe that the RTI has been an empowering instrument over the last almost 12 years of its existence, that these rules must be contested, these rules must be opposed, and absolutely no dilution should be allowed in the entire RTI structure. मैं संक्षेप में इसको हिंदी में दोहरा देता हूं। 2004 में जब यूपीए की सरकार बनी तो नागरिकों को अधिकार देने के लिए जो एक मूलभूत ढांचे की संरचना की गई, उसकी पहली कड़ी राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का
के अधिकार का कानून था। और पिछले 12 वर्ष में जब से यह कानून बना, इसने आम नागरिक को सशक्त किया है और सरकार की जो अंदर की गतिविधियां हैं, किस तरह से सरकार निर्णय लेती है, किस अफसर ने उस निर्णय के बारे में क्या कहा, किस तरह की सरकार की फाइलों के ऊपर गुफ्तगू हुई है, पूरी सरकार 10 रुपए में कोई भी नागरिक अपने टेबल पर डाउनलोड कर सकता था। और जब यह आरटीआई का सूचना के अधिकार का कानून बनाया गया, तो सरकार के भीतर से, सरकार के बाहर से इसका बहुत विरोध हुआ। और जब ये क्रियान्वित होना शुरू हुआ, तब भी ऐसे स्वर उठते रहे कि इससे जो प्रशासनिक ढांचा है वो कमजोर होगा। पर यूपीए की सरकार ने 10 साल में ऐसा कोई कदम ना उठाया, ना किसी को उठाने दिया, जिससे कि सूचना के अधिकार का जो कानून है वो किसी भी तरह से कमजोर हो। हाल ही में जब भाजपा की सरकार बनी, एनडीए की सरकार बनी, तो पिछले 34 महीनों में ये निरंतर और लगातार कोशिश की गई कि एक अनौपचारिक तरीके से इस कानून को वाटर डाउन किया जाए। जो आरटीआई की रिक्वेस्ट थी, उनका जवाब सही समय पर नहीं आता था, अपील्स डिस्पोज नहीं होती थी, और जो लोग इस क्षेत्र से जुड़े रहे हैं, काम करते रहे हैं, कई उसमें मुख्यमंत्री भी हो गए, उन सबका यह मानना था कि एक संयोजित तरीके से इस अधिकार को डाइल्यूट किया जा रहा है। हाल ही में उस प्रक्रिया को ये सरकार फॉर्मलाइज करने के मकाम पर पहुंच गई है। ड्राफ्ट रूल्स 2017 के सरकार ने सार्वजनिक किए हैं, डीओपीटी की वेबसाइट पर वो उपलब्ध हैं, और अगर उनको संज्ञान में लिया जाए तो जिस तरह से इस कानून को एक्सेस करने में, सूचना प्राप्त करने में कठिनाइयां और बाधाएं पैदा की जा रही हैं, उससे साफ साफ तौर पर सरकार की मंशा झलकती है। जैसे कि आपकी जो आरटीआई की अर्जी है, सूचना की अर्जी है, अगर वो 500 शब्द से ज्यादा होगी तो अधिकारी उसको खारिज कर सकेगा। जो आपको पैसा देना पड़ेगा उस सूचना के लिए, उसको दुगना और तिगना कर दिया है। जो सूचना सरकार आपको भेजेगी उसका खर्चा भी आपको उठाना पड़ेगा। अगर आपने कोई सूचना के लिए अर्जी डाली है और खुदा ना खास्ता आपके साथ कोई हादसा हो जाए, तो फिर वो सूचना की अर्जी वहीं पे अबेट हो जाएगी, खारिज हो जाएगी। और लोगों का यह मानना है, खासकर आरटीआई के कार्यकर्ताओं का, कि इस प्रावधान से उनके ऊपर जो खतरा है वो बढ़ेगा। और पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि कई आरटीआई के कार्यकर्ताओं को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। इसी तरह से जो पब्लिक अथॉरिटी को अधिकार दिया गया है काउंटर क्लेम फाइल करने का, इससे जो सारी प्रक्रिया है वो सारी प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा विलंब होगा। तो कुल मिलाकर इसका मूलभूत सार ये है कि सरकार
सूचना के अधिकार के कानून को खत्म करना चाहती है, उसको समाप्त करना चाहती है। और समाप्त इस तरह से नहीं करना चाहती कि कानून को रिपील करके, पर उसको रूल्स के माध्यम से इतना कठिन और जटिल बना के कि आम नागरिक को वो सूचना लेने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़े। और इसीलिए जितनी प्रगतिशील ताकतें हैं उनका ये उत्तरदायित्व तो बनता है कि इन रूल्स का विरोध किया जाए। ये जो ड्राफ्ट रूल्स हैं 2017 और आरटीआई के कानून में किसी भी तरह की कमजोरी लाने की जो कोशिश है, उसको सबवर्ट करने की कोशिश है, उसको पूरी जोर से रोका जाए। द फ्लोर इज ऑल योर्स। आशीष, if we are finished with the RTI, then we'll go on to whatever else. हाँ। मेरा सवाल यह है कि आपने कहा कि पारदर्शिता कम करना चाहती है, सरकार से संबंधित जो फैसले रहे, सरकार नहीं चाहती कि जनता के बीच में हो जाए, लोग समझे। तो सवाल ये उठता है कि आप लोग किस तरीके से विरोध करेंगे कि सरकार आपके दबाव में आ जाए, आपकी बात को समझ जाए, क्योंकि अब तक सरकार ने विपक्ष की कोई बात ऐसी नहीं मानी है जो दिखाई दे और आपकी जीवन। देखिए, विरोध करने के दो तरीके होते हैं। एक लोकतांत्रिक प्रणाली में सार्वजनिक विरोध होता है कि जब भी ऐसा कोई तानाशाह कानून लेके आया या कोई ऐसा कानून आता है तो उसका संसद के भीतर और संसद के बाहर विरोध होता है। और दूसरा, जो भी रूल्स हैं उन रूल्स को सदन के पटल के ऊपर रखना जरूरी है। और अगर सदन उनको 15 दिन में उसके ऊपर कोई टिप्पणी ना करे या उसको डिसअप्रूव ना करे तो वो रूल्स अप्रूव्ड माने जाते हैं। तो इसलिए अभी तो ये ड्राफ्ट स्टेज है, क्योंकि सरकार ने लोगों से अपनी राय मांगी है। तो हम अभी तो लोगों से अपील करना चाहते हैं, खासकर जो इस कानून से जुड़े रहे हैं, इससे उनको लगता है मुल्क को फायदा हुआ है, कि अपना जो विरोध है वो सरकार के समक्ष दर्ज करें। और उसके बाद भी अगर सरकार अपनी कार्रवाई पर उतारू रहती है तो फिर संसद के भीतर और संसद के बाहर उसका विरोध किया जाएगा। उन दोनों चीजों में फर्क ये है कि 2012 में जो नियम बने थे वो 2005 के नियमों को बेहतर करने के लिए थे। 2017 में जिन नियमों का सरकार प्रस्ताव रख रही है उसका मूलभूत से उद्देश्य ये है कि बगैर आरटीआई के कानून को रिपील किए उसको किस तरह से समाप्त किया जा सकता है। तो उन दोनों सिचुएशंस में फर्क है। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है कि ऐसा नहीं था कि विरोध के स्वर आरटीआई के खिलाफ जब हमारी सरकार थी तो सिर्फ सरकार के भीतर से नहीं, कि जो लोग आज विपक्ष में, जो लोग आज सत्ता में हैं, जब वो विपक्ष में थे तो उनकी तरफ से भी जहां जहां वो सरकार में थे ये स्वर उठता रहा था। पर कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी इस बात पे बिल्कुल अटूट थी कि इस कानून में कोई भी डाइल्यूशन ना किया जाए। और जैसे हमने पहले कहा कि ये तो अभी ड्राफ्ट स्टेज है, कि लोगों से अपनी सिफारिशें, अपने कमेंट्स मांगे हैं ड्राफ्ट रूल्स के ऊपर सरकार ने। तो अगर लोग
एक संयोजित तरीके से जो अपनी पीड़ा है, अपनी वेदना है, उसको सरकार के प्रति दर्ज करते हैं और उसके बाद सरकार उनको संज्ञान में लेती है और इस अटेम्प्ट को, जो इल कंसीव्ड अटेम्प्ट है, उसको अबैंडन कर देती है, तो वो एक परिपेक्ष है। और सरकार अगर इस पर उतारू रहेगी तो जरूर इसका बाकी राजनीतिक दलों से बातचीत करके विरोध किया जाएगा। Well, the draft rules, one of the biggest differences is with regard to who is going to bear the cost of the reply. You see, earlier on, under the 2012 rules, it was the government's responsibility to send you the reply, right? And the government would bear the cost of that reply. Now that paradigm has been reversed. So therefore, you will have to bear the cost, or the RTI applicant would have to bear the cost of the reply. And number two, if you look at the draft rules, I'll point you out to the exact rule, which says that the cost of, let's say, photocopying a page goes up from ₹1 to ₹2. The cost of photocopying the exact model, right, would be the actual cost which you would have to bear, and etc., etc. There are 3 or 4 points which have been specifically mentioned in the draft rules. Essentially what it does is, yes, this is Rule 4. Fee for providing information under subsection 4 of Section 4 and subsection 1 and 5 of Section 7 of the Act as notified by the central government from time to time shall be charged on the following rates, namely ₹2 for each page A3 in small size paper, actual cost or price of photocopy in large size paper, actual cost or price for samples of models, ₹50 per diskette or floppy, price extracted for publication, or ₹2 per page of photocopy, etc., etc. So if you read them in its totality, what it does is it raises the bar. It raises the pecuniary bar or the financial bar for a citizen to be able to access information from the government. The entire intent of the RTI was that by depositing a fee of ₹10 and giving an application, you would be able to access whatever information is available on that subject with the government at the government's cost. So that intent is being diluted. Yeah, Manish? Manoj, if we were as paranoid and as nervous as they are, then we could have done the same thing. It is not that the nervousness or the trepidation in the annals of the bureaucracy was not there at that point in time. But we chose to stay the course because we believed that it is in the larger interest that citizens should know as to how their government functions. If you remember, there were debates and raging debates at times that file noting should not be made public,
only the end product should be made public. But we did not allow that dilution to take place, irrespective of the fact that we were at the receiving end of, some things which were taken out of context. But here you have a situation whereby the government is either apprehensive that if the RTI paradigm is not diluted, a lot of things may come out in the public space which may not be very well disposed towards them, or it is just hubris. At times, in the arrogance of power, which is one of the translations of hubris, people try and be completely dictatorial in their behavior. In either case, RTI has established that it's been the most empowering instrument for the citizen. So therefore, its dilution under any circumstances should not be allowed and will not be allowed and permitted. RTI is over, then we'll move on to the rest. Huh? देखिए, 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तो वो सांप्रदायिकता के नारे पे नहीं बनी थी, वो सबका साथ सबका विकास के नारे पे बनी थी। और जिस तरह से पिछले कुछ महीनों में आप सरकार की तरफ से और भाजपा की तरफ से सांप्रदायिकता का बोलबाला देख रहे हैं, उसका मुख्य उद्देश्य ये है क्योंकि सरकार अपने विकास के एजेंडे पर पूरी तरह से विफल रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत के युवाओं के साथ ये वायदा किया था कि हम 10 लाख नौकरी हर महीने पैदा करेंगे। सरकार के आंकड़ों के अनुसार $1 million jobs a month, सरकार के आंकड़ों के अनुसार लगभग रोज 550 नौकरियां गंवाई जा रही हैं, ना कि कोई नौकरी जोड़ी जा रही है। तो इसलिए अपनी विफलताओं से और प्रशासनिक विफलताओं से ध्यान लोगों का बटाने के लिए ये सारा सांप्रदायिकता का ताना बाना बुना जा रहा है। तो इसलिए हमारी कोशिश ये रहेगी एक रचनात्मक विपक्ष के नाते कि जो जनता से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, रोजगार की, रोटी की, उन समस्याओं के ऊपर सरकार को कसौटी पे कसा जाए और ये जो ध्यान बटाने की कोशिश हो रही है, उस साजिश को सफल ना होने दिया जाए। जहां तक कश्मीर का सवाल है, देखिए, प्रधानमंत्री जी को भी इस चीज के ऊपर आत्मचिंतन करना चाहिए कि क्या जम्मू कश्मीर में और खासकर कश्मीर घाटी में इस्ट्रेंजमेंट की जरूरत है कि एंगेजमेंट की जरूरत है। So while the Prime Minister is telling the people of Jammu and Kashmir that they must choose between terrorism and tourism, the Prime Minister also needs to introspect and perhaps very seriously introspect that does Kashmir require estrangement or does it require engagement? And the fact remains that in the past year or so, the BJP-PDP government in the state and the BJP-NDA government in the center has only increased the estrangement and the alienation of the people. एक मिनट यार, एक मिनट।
देखिए, अगर पीडीपी का ये मानना है तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? वहां पे भाजपा पीडीपी की सरकार है, अगर उनके पास प्रमाण हैं तो प्रमाण के आधार पर कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, सवाल ये है कि पिछले 1 वर्ष का जो घटनाक्रम है, वो घटनाक्रम इस बात को प्रमाणित करता है कि भाजपा पीडीपी की जो जम्मू कश्मीर की सरकार है और केंद्र में जो भाजपा की सरकार है, उन दोनों के रेख रखाव में वहां पे जो एलिनेशन की भावना है वो बढ़ी है। और इसीलिए हम बड़े अदब और सत्कार से ये दोहराना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी को इस चीज पे आत्मचिंतन करना चाहिए कि क्या कश्मीर को इस्ट्रेंजमेंट की जरूरत है कि एंगेजमेंट की जरूरत है। आशीष, look, it's a DPCC related issue. We do not deal with corporation elections from this podium. So therefore, all questions, all queries with regard to the corporation elections should be addressed to the Delhi Pradesh Congress Committee. Their headquarters are on Talkatora Road. One second. Sorry. I'll just come back. I think it's a rhetorical no-brainer. It's not an option. It's not even an offer. It's frankly a rhetorical no-brainer. The fact is that it is the responsibility of the central government and the state government to ensure that the feeling of estrangement and alienation is mitigated. That there needs to be an outreach. A parliamentary delegation, a multi-party parliamentary delegation had gone to the valley last year at the height of the violence. The centre never followed up on that initiative. So therefore, under those circumstances, these rhetorical flourishes that choose between terrorism and tourism, the bridge or the tunnel has been conceived, as a developmental showcase for the people of POK. I'm sorry, it doesn't get you anywhere. That particular tunnel was conceived by the UPA during an UPA government, and the intent was to better connect the people of Jammu to the people of Kashmir. You see, there are only 2 empirical facts which can be substantiated. Empirical fact number 1, that the ISI interferes into Jammu and Kashmir. Empirical fact 2, that they have been promoting and propagating violence in the valley, now going back almost 3 decades. Insofar as the rest is concerned, it is speculative. So therefore, if you've put out a story, it would be appropriate if the government was to react to it, confirm the facts that yes, what the story is saying is correct, we have empirical evidence, and then take all possible steps to ensure that it is shut down. As I said, मैं शायद अंग्रेजी मेरी थोड़ी कमजोर है और हिंदी उससे ज्यादा कमजोर है कि कॉरपोरेशन का चुनाव दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी देखती है। जितने सवाल कॉरपोरेशन के चुनाव से जुड़े हुए हैं, कृपया करके
दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ उसको डायरेक्ट कीजिए। लास्ट क्वेश्चन। हाँ, 1 सेकेंड। हाँ, राज्यसभा संसद में इस पर चर्चा की गई। चुनाव आयोग का बयान आया कि हमारी मशीनों में गड़बड़ी नहीं, क्लियर कट ये बयान है। अब मध्य प्रदेश से दोबारा इस टाइप की जब गड़बड़ियां आई हैं तो चुनाव आयोग कह रहा है कि हम नई मशीनें खरीदेंगे जिसको टेम्पर्ड नहीं कहेगा। ये तो दो बयान आए, इनका कॉन्ट्रडिक्शन देखती है बात। वेल नंबर 2, क्या ये मानते हैं कि चुनाव आयोग अपनी गलती को स्वीकार कर रहा है? well, ultimately democracy is based on public trust, right? And if there is a feeling of widespread distrust in the electronic voting machines, the election commission, rather than taking a cussed stand on it, should introspect. I mean, how does it really bother the election commission that if rather than EVMs, the voting is done on paper ballots? Ultimately, if the stakeholders, whether rightly or wrongly, are apprehensive that these machines have been gerrymandered with or are capable of being gerrymandered, there's no reason for the election commission to become so defensive about it. The election commission is at best the arbiter of the democratic process. It is not the controller of the democratic process. And if the stakeholders of that democratic process are feeling apprehensive, whether rightly or wrongly, the election commission should walk the extra mile. And the election commission should voluntarily say that, all right, fine, if the stakeholders do not have confidence in this paradigm, we will have the next election on paper ballots. What's the difficulty with that? Last. देखिए अजय, this is not even the issue. The issue is not whether EVMs can be tampered with or not. The fact that EVMs can be tampered with is something which has been demonstrated over and over again by different stakeholders. By the BJP when it was in the opposition, by the Congress also at some point in time, by different stakeholders. That is not the question. The question is that if there is an apprehension, ultimately democracy is based upon public trust, that people and stakeholders must have trust that the instrument of exercising the franchise and the instrument of tabulating that franchise is something which is tamper-proof. Now, if that confidence is not there, the Election Commission does not require to become the advocate of the electronic voting machine. The Election Commission should very well turn around and say that if the stakeholders do not have confidence, yes, we are ready to explore the possibility of shifting over to an alternative system. There should be no difficulty with that. Thank you. Last question, I have a train to catch here. देखिए, जैसे मैं पहले दोहरा चुका हूं, ये सारा सांप्रदायिकता का ताना बाना इसलिए बुना जा रहा है क्योंकि अपने बुनियादी वायदों के ऊपर ये सरकार, केंद्र की सरकार, पूरी तरह से विफल रही है। और हमारा ये उत्तरदायित्व है, हमारी जिम्मेवारी है कि जो लोगों की जिंदगी से जुड़े हुए बुनियादी मसले हैं, हम सरकार को उस कसौटी पे कसेंगे। तो इस विरोधाभास का जवाब योगी आदित्यनाथ से बेहतर और कोई नहीं दे पाएगा।
Well, it's a Supreme Court decision. And if somebody wants to quibble with the merits of the Supreme Court decision, the appropriate thing to do is to go and file a review. The fact is that the court would have come to this conclusion after taking all facts into consideration. And the reality is that drunken driving is a problem in this country. And drunken driving does lead to avoidable deaths. So therefore, if people have a difficulty with what the Supreme Court has decided, the only and the appropriate way of addressing it is to go back to the court in a review. Thank you. हो गया यार.